Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss the basics of marketing. Basically, the topic of my presentation today is about principles of marketing. Today we will discuss the introduction of marketing. So let's start with the chapter number 1 of principles of marketing, that is creating and capturing customer value. So first of all, I would like to discuss that what is marketing. Marketing is the process which companies create value for the customer and build strong customer relationship in order to capture the value from customers in return. Actually, marketing uh, is basically a wide range of activities. It is a basically social and managerial process. क्योंकि आप देखिएगा कि एक्चुअली इस सोसाइटी के अंदर हमारे माशरे के अंदर मार्केटिंग समझा जाता है कि जस्ट लाइक एन एडवर्टीजमेंट इज मार्केटिंग। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट ये है कि सेलिंग इज अ मार्केटिंग या फिर प्रमोशन इज द मार्केटिंग। These all are myths about marketing. Marketing is not synonym with the selling or advertisement or promotion. These all are maybe the part of marketing, but not actually the marketing. Marketing is what we call overall building and maintaining profitable relationship with the customers. So we will move forward with the marketing concept. Basically, marketing की जो base है, जो marketing की foundation है, that is marketing process. ये जो आपके सामने स्लाइड ओपन है इस वक्त, दैट इज अबाउट मार्केटिंग प्रोसेस. इट इज अ 5 स्टेज प्रोसेस जो कि आपको इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर शो हो सकती है. दिस इज बेसिकली द सिंपल मॉडल ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप इज to understand the marketplace and customer needs and wants. The second is designing a customer driven marketing strategy. The third one is construct a marketing program that delivers superior value. The fourth one is building and maintaining profitable relationship with the customers. And the last one is that is result basically. The last one is result. That is capturing value from the customers in return. When we will create value for the customer in first 4 steps, in return, customer will automatically advocates you that will return the value towards the company. That is actually the concept of capturing value from the customers. So we will explore all these steps in step-by-step process. So the first step is understanding the marketplace and customer needs. So for this stake, we have to understand the 5 core and marketplace concepts. These are needs, wants, and demands, market offerings, value and satisfaction, exchange and transactions, and relationships and markets. These are 5 core steps in understanding the marketplace and customer needs. Basically, needs की 3 categories हैं. The first one is needs, then wants, then desires or demands. So when we talk about needs, wants, and demands, so the needs is the basic necessities. The first one is basic necessities. Basic necessities means your air, food, water, shelter, your safety, your clothing, your food. These are all basic necessities. It may be physical needs or social needs. Social need means belonging and affections. Uh, Individual needs, knowledge and self-expression, recognition. These all are basically the parts of needs. Needs is basically uh, the basic necessity. I'm repeating. So when we move forward towards the wants, that is the next stage towards the needs. Need is uh, backed by your individual culture and individual personality, society's culture and individual personality. Basically, जब आपका कल्चर आपको सपोर्ट कर रहा हो और आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो,
पर्सनालिटी डिफरेंट है तो ऑब्वियसली आपकी वांट्स बदलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आई नीड फॉर फूड बट आई वांट टू ईट बर्गर, बिकॉज कि हमारा कल्चर के अंदर ये फास्ट फूड जो है वो प्रिवेल कर गया है. इसी तरह क्लॉथिंग इज माई नेसेसिटी, दीज आर नीड्स, बट वांट्स की शेप के अंदर जब सपोज आई एम वेयरिंग दिस पेंट कोट, सो दिस इज माई, दीज आर माई वांट्स, बिकॉज कि हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी फॉर अ फैकल्टी मेंबर दैट नीड्स दिस सूट. सो नीड्स वांट्स की शक्ल इख्तियार कर जाती है. Then the third stage is demands. Demands are basically backed by your buying power, your purchasing power. जब आपकी purchasing power back करती है, आपको support करती है, तो then we lead towards demands, desires. This links with the affordability of the individual, means willingness to pay. When we are willing to pay, when we are affordable, then we move toward demands. For example, I need to travel, but I demanded for an aircraft or a limousine or a sports car. That these are desires. These are demands uh, with connected with the affordability and willingness to pay. So these are the concepts of needs, wants, and desires. The second concept in understanding the marketplace and customer needs, that is market offerings. Market offerings are some combinations of physical goods and service-oriented benefits offered to markets to satisfy a need or want of the customer. For example, what we are going to offer for sale in the market means हम क्या बेचने जा रहे हैं मार्केट के अंदर. Either it is a good, either it is a service. These are market offerings. So the question is, what are the different offerings? Either physical goods, service, or experiences that can be marketed as a product. So these are market offerings. Simply, the market offering means what we are going to offer for sale in the market. And the third concept in understanding the marketplace, that is value and satisfaction. Before explaining value and satisfaction, I want to also explain that what can be marketed. जैसे मैंने पहले कहा कि either it can be physical goods, or it can be service, or it can be experience. So these are the examples of goods, like you can see in the slides. Goods, सर्विसेज, इवेंट्स, एक्सपीरियंस, जैसे हमारे पास वर्ल्ड कप होता है, PSL होता है, दीज आर इवेंट्स. ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस, आफ्टर द इवेंट वी कैन शेयर और मार्केट द एक्सपीरियंस एज वेल. ऐसे ही पर्सन्स की मार्केटिंग की जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्गर, बिल गेट्स, दीज आर द पर्सनालिटीज जिनकी भी मार्केटिंग होती है. ऐसे ही प्लेसेस की, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टूरिस्ट स्पॉट है या फिर कोई अट्रैक्टिव प्लेस है, that can also be marketed. Now the concept is the organizations can also be marketed. जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ग्रामीण फोन है, जैसे यूनिलीवर है, these can also be marketed. Then information can also be marketed. जैसे कोई अवेयरनेस कैंपेन है, जैसे कोई कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी है, जैसे कोई जो वो इंफॉर्मेशन ब्राउशर है, दिस कैन ऑल्सो बी मार्केटेड. देन ऐसे ही आइडियाज की मार्केटिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कॉजेज होती हैं, जैसे वुमेन डे है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे लेबर, चाइल्ड लेबर है. ऐसे ही प्रॉपर्टीज की भी मार्केटिंग होती है, हाउसेस की, प्रॉपर्टीज की, एसेट्स की भी मार्केटिंग होती है. सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, the third concept in understanding the marketplace and customer value, that is value and satisfaction. Value and satisfaction is directly connected with the customers. When we talk about value, that it means it is the inner strength or capability of a product that can solve the problem of a consumer. Means what the product is actually delivering towards the customer, that is value. Customer perceived value means what customer is perceiving.
But customer is perceiving the value from the goods or services or the experiences from the company. That is customer perceived value. Means customers evaluation of the difference between total customer benefits and total customer cost of marketing offerings relative to those of competing offers. And the satisfaction is basically uh, the position of consumers minds resulted from the expectation and actual performance of the product. For example, uh, if I'm buying a product in if I want to buy a product, suppose I want to buy this sanitizer, so I expected कि ये मुझे 100 रुपीज का मिलेगा और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ये होनी चाहिए कि इट किल्स 99% ऑफ जर्म्स. सो ये परफॉर्मेंस मैंने इससे एक्सपेक्ट की और इसकी प्राइस मैंने अपने माइंड के अंदर सेट की कि दैट वुड कॉस्ट मी अबाउट 100 रुपीज. सो अब अगर ये 100 रुपीज की वैल्यू मुझे डिलीवर कर देगा या फिर इसने मेरी नीड पूरी कर दी तो दैट लीड्स टुवर्ड सेटिस्फैक्शन. और अगर ये मुझे यूज करने के बाद फील होता है कि आई हैव पेड एक्स्ट्रा मनी टुवर्ड्स द कंपनी एंड इसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो देन इट विल लीड्स टुवर्ड डिससैटिस्फैक्शन. सो सेटिस्फैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन का डायरेक्टली ताल्लुक कस्टमर की यूसेज के साथ है, कस्टमर के एक्सपीरियंस के साथ है. सो वैल्यू, perceived value and satisfaction, that are also the concept of understanding the marketplace and customer needs. Then the next concept, the fourth concept in understanding the marketplace and customer needs, that is exchange, transactions and relationships. Exchange means we can simply say the barter system, obtaining a desired object from someone by offering something in return. आप कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं. ट्रांजैक्शन कब हम कहेंगे? जब वहां पे मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व हो जाएगी. जब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जब हम कुछ ले रहे हैं और इन रिटर्न हम कुछ पैसे दे रहे हैं या फिर कुछ पैसे लेके उसको कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो दैट विल लीड्स टुवर्ड ट्रांजैक्शन, trade of values between two or more parties that involve monetary value. That means transaction. And relationship consists of actions to build and maintain desirable relationship by delivering superior value towards the customer. ये जो सेंटेंस है superior value towards the customer, ये बहुत दफा रिपीट होगा in marketing. So this is basically the concept of marketing. You have to deliver superior value towards the customer for capturing value from the customers. So the last one in this first step, that is markets. We have also need to understand the markets. What is the basic concept of markets? Market is basically set of actual and potential buyers of the products or services. हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मार्केट्स कौन सी है. अब जब मार्केट्स की हम बात करेंगे तो दैट मे बी फिजिकल मार्केट और इट मे बी वर्चुअल मार्केट. ये वर्चुअल मार्केट भी हो सकती है, मींस ऑनलाइन मार्केट हो सकती है. सो मार्केट्स की बेसिकली 4 टाइप्स हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी प्योर मोनोपोली है, प्योर कंपटीशन है, फिर आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, फिर इसी तरह ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन है. ये 4 तरह की मार्केट्स जो है वो हो सकती हैं. इन डिटेल हम आगे वाले किसी लेक्चर के अंदर इसको जो है वो मार्केट्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट मार्केट सिस्टम. अब जब हम मार्केट्स की बात की तो मार्केट सिस्टम जो वो दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टर्स एंड फैक्टर्स. Actor means all these suppliers, companies, competitors, intermediaries, and end users. These are actors. Means performing in the market, जो के market के अंदर perform कर रहे हैं in the system, who are affected by the following major environmental forces, जैसे कि demographic forces हैं, economic forces हैं, physical forces हैं, geographical forces हैं, technological forces हैं, political and legal forces हैं, socio-cultural forces हैं. In short, we can say the pest forces. ये भी आपको डायरेक्टली मार्केट सिस्टम को इफेक्ट कर रही होती है. दीज आर एक्टर्स. फैक्टर्स मींस अदर मार्केट कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट इकोनॉमी की कंडीशन है, आपकी प्राइसेस हैं, एक्सचेंज रेट्स हैं. दीज ऑल आर बेसिकली द फैक्टर्स. सो मार्केट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्टर्स एंड फैक्टर्स. So in modern marketing system,
we can say uh, we are connected with multiple factors and actors, just like suppliers, um, market intermediaries, competitors, companies, marketers. These all are connected. You can say in this diagram, this supplier is supplying towards companies, marketer, and competitors as well. Then marketing intermediaries are playing the role in between the manufacturer and end user. So that finally there is end user, that is final user. So these are major environmental forces which are affecting our marketing system. So uh, now we come towards that what is marketing management. Marketing management is the art and science of choosing targeted customers, targeted markets, and building profitable relationship with the customer. What it means by profitable relationship, that is the core or theme of the मार्केटिंग वी हैव टू डेवलप प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप. जब हम प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टू क्रिएट लॉयल्टी विद द कस्टमर. वी हैव टू अट्रैक्ट कस्टमर for multiple purchases, for repeat purchases. So that is basically the concept of profitable relationship. Means customer दोबारा भी आए, thrice भी आए, means बार बार आपको ही purchase करे. That will leads toward profitable relationship. For managing customers properly, we need to think about what customers will we serve. Means uh, our targeted customers. How can we best serve these customers? Means our positioning strategy. Then how can we increase our profitability through satisfaction of our target customers? These are the basic questions for managing customers properly. So the second step in our marketing process, that was designing a customer driven marketing strategy. The first step was to understand the market needs, or to understand the marketplace, or to understand the customers. We can simply say to understand the needs, wants and desires of the customers. So needs को भी understand करना है, wants को भी understand करना है, and desires को भी understand करना है. For a company it is very necessary कि needs कौन सी है customer की. For example, I can tell you the example of Unilever. जैसे for example, Unilever is offering Lifebuoy as well as Lux, as well as Safeguard, and many other soaps. In soaps category, I am telling about just. So, what is the strategy behind these all offerings? You can say कि Lifebuoy वो इसलिए जो वो दे रहे हैं कि कुछ customers मेरे ऐसे होंगे जो price conscious होंगे. तो उन price conscious customer के लिए they offered Lifebuoy. इसी तरह कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो ब्यूटी कॉन्शियस होंगे, जो सॉफ्टनेस कॉन्शियस होंगे, so, उनके लिए उन्होंने लक्स ऑफर कर दिया. कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनको जो जर्म्स कॉन्शियस हैं, तो उनके लिए उन्होंने सेफ गार्ड ऑप्शन जो वो रख दी. सो अब ये इतने सारे सोप्स एक ही कंपनी जो है वो क्रिएट कर रही है, इतने सारे जो वो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन बना दी just because of market offerings, that they want to serve market with different offers. They want to serve market according to their needs, wants and desires. कुछ की नीड्स को जो है वो कोप कर रहे हैं, कुछ की वांट्स को कोप कर रहे हैं, कुछ की डिजायर्स को कोप कर रहे हैं. आपको मार्केट के अंदर आइसक्रीम जो है वो 20 रुपए की भी मिल जाएगी और 3000 रुपए लीटर वाली भी मिल जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स ऑफ द कस्टमर. So firstly we have to understand in first step of marketing process, that is needs, wants and desires. The second one is designing a customer driven marketing strategy. So when we talk about strategy, strategy means making a policy, making a comprehensive plan. अब जब हम strategy की बात करते हैं तो there are basically various strategies that we are opting in our marketing plans. So the basic marketing strategies, these are market segmentation, the first one. Then the second thing is market targeting. The third one is market positioning. Then the fourth one is market differentiation and market uh, uh, positioning as well. So these strategies will be explained in later lectures. ये हम जो वो इसके ऊपर chapter number 6 के अंदर, chapter number 7 के अंदर डिटेल के साथ explain कर रहे होंगे कि what are some marketing strategies that we have to opt. So the simple concept is here in marketing strategy we have to understand that what is about demarketing.
Demarketing is also a strategy that refers toward uh, declining the demand or eliminating a demand strategy कि आप जब डिमांड को कम करना चाह रहे हैं या फिर टेम्परेरीली किसी चीज की डिमांड को रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप डीमार्केटिंग करते हैं जैसे जस्ट लाइक वापडा कि वापडा के बिल के ऊपर अगर आप बैक साइड के ऊपर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि इतने से लेके इतने बजे तक के औकात के अंदर आप अपनी इस्त्री ना चलाएं, आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज ना करें, आप अपने एसी ना चलाएं, एसी ना ऑन करें, just because to reduce the demand or temporarily or for the permanent purpose you can use this strategy ताकि आप या तो शिफ्ट कर सकें किसी और सोर्स के ऊपर या फिर रिड्यूस कर सकें. सो इसी तरह इनके दरमियान क्योंकि हमने सप्लाई और डिमांड के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है, वी हैव टू मेक अ बैलेंस. सो फॉर दिस पर्पस देयर इज अ स्ट्रेटजी दैट इज कॉल्ड डीमार्केटिंग. So then in designing customer driven marketing strategy there are some orientations जिनको हम बोलते हैं marketing management orientations. These are the concepts of marketing. चार तरह की basic orientation and the fifth one is emerging one. So these 5 orientations are basically the strategies we can say. The first one is production concept, then we can say product concept, the third one is selling concept, the fourth one is marketing concept, and the fifth one is societal marketing concept. So for this purpose we can say uh, the first one we will explain step by step. The first one is production concept. अब जब हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट वेयर the concept of availability and affordability prevails. जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा अवेलेबिलिटी का और हाईली अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का. मींस कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे कि लार्ज स्केल प्रोडक्शंस करके इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को जो है वो ऑप्ट करके हम जो है वो उसकी अफोर्डेबिलिटी मींस लेस प्राइस के अंदर अवेलेबिलिटी को जो है वो इंश्योर कर सकते हैं. सो द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स रिलेटिवली लो and they are available almost everywhere. These are the examples of production concept. You can say means we are not talking about the quality here, we are talking about the quantity here. So the second concept is product concept. In here the product concept we are talking about the quality, performance and features of the product. Means here we are talking about quality, not the quantity. हम कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स की भी बात करेंगे, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी डिस्कस किया जाएगा और न्यू इनोवेशंस को भी जो है वो इनपुट दिया जाएगा क्योंकि कस्टमर इज बॉदरिंग हियर फॉर द क्वालिटी इटसेल्फ. सो this is what we call the product concept. These are the examples of product concept like Sony, Mercedes or Rolex watch. These are the concept of product concept. So the third one is selling. In selling concept most of us or we can say कि society के अंदर जो concept of marketing prevail कर रहा है that is about selling. कि हम जो selling कर रहे हैं that is marketing, but not. Selling is just about to attracting the customer by advertisements or selling with the promotional efforts. कि आप जो है वो promotional efforts करके या advertisements करके आप जो है वो sales को increase कर रहे हैं. यहाँ पे concept is that customer will not buy enough of the firm's products unless it undertakes attractive advertisements and large scale of selling and promotional activities. So communication with the customers properly and creating strong appeal about the products or services among them, that is the selling concept. And selling concept की example आपके इस वक्त सामने screen के ऊपर show हो रही है. The next one is marketing concept जो कि latest है. Marketing concept is basically the theme of marketing that we have to understand the needs, wants and desires of the customer and delivering them the desired satisfaction and delivering them the with the relationship. We can say we have to build a profitable relationship with the customer, that is marketing concept. यहाँ पे आप concept apply करेंगे that customer is a king, customer is a boss. So इसको आप बोलेंगे marketing concept. These are the examples of marketing concept. These companies are basically, you can say, applying the concept of marketing. So the latest and emerging one
that is societal marketing concept. We can say societal marketing concept is the idea that company should make a good marketing decisions by considering consumer wants and company requirements, but uh, as well as consumers long-term interest and society's long-term interest. We can use the concept of CSR, social corporate social responsibility. इस डायग्राम के अंदर आपको पता चलेगा कि इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वी वर कंसर्न्ड अबाउट ओनली टू एस्पेक्ट्स, जैसे कि कंज्यूमर वांट्स एंड सेटिस्फैक्शन एंड कंपनीज प्रॉफिट। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तक सिर्फ यही दो एलिमेंट्स थे, लेकिन इन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वी हैव टू ऐड द सोसाइटीज वेलफेयर एज वेल, कि आपने कंज्यूमर की वांट्स एंड सेटिस्फैक्शन को भी जो वो मीट करना है, कंपनीज के प्रॉफिट्स को भी जो वो हाईलाइट करना है और उनको इम्प्रूव करना है, एज वेल एज यू हैव टू टेक केयर अबाउट द society's interest or society's welfare. So this is the concept of societal marketing concept. So this is the these are some examples, or locally we can say just like the Bahria town. अब बहरिया जो है वो बहरिया दस्तरखान, ये इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स वो सोसाइटी का भी ख्याल रख रहे हैं, साथ साथ जो वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन और कंपनीज के प्रॉफिट्स को भी जो वो मीट कर रहे हैं। अब CSR को कुछ कंपनीज और मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर यूजिंग इन देयर एडवर्टीजमेंट एज वेल, वो इसको यूज कर रहे हैं प्रॉपरली, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करते हैं, साथ साथ उसकी एडवर्टीजमेंट भी करते हैं ताकि हमारा कस्टमर पूल एनहांस हो। सो these are some major marketing strategies. We can say these are 5 concepts about marketing. Means we can say these 5 concepts are product concept, production concept, then selling concept, then marketing concept, and the 5th and emerging one, the latest one, that is societal marketing concept. So today's lecture is about the first 2 steps in the marketing process. The first one was about understanding the needs, wants, and desires of the customer. The second one is to design a customer-driven marketing strategy for enhancing or creating relationship with the customers. So, inshallah, in next lectures, we will discuss about the next few steps of the marketing process that are remaining. Means remaining 3 parts will be discussed in the later discussions or later videos as well. Thank you so much. Have a good day.